Hello बच्चों, let us read the question. The question says a gas is initially at a pressure of 100 kilopascal and its volume is 2 meter cube. Its pressure is kept constant and volume is changed from 2 meter cube to 2.5 meter cube. Its volume is now kept constant and the pressure is increased from 100 kilopascal to 200 kilopascal. जो आपका volume is kept constant and pressure जो बढ़ गया 100 से 200 हो गया. The gas is brought back to its initial state with the pressure varying linearly with the volume. So आपको क्या निकालना, whether the heat is supplied or extracted from the gas in the complete cycle, that you have to find, and how much heat was supplied or extracted, right? So यहाँ से हम कह सकते हैं कि like फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जब गिवन क्वेश्चंस में ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या चीज़ें गिवन है, क्या बन सकता है. ठीक है, तो हम प्रोसेस देखें. सो इफ यू लुक एट सम प्रोसेस, देयर इज ए गैस जो इनिशियली आपका है वो कांस्टेंट प्रेशर पे. गैस जो आपका इनिशियली है, गैस इज इनिशियली एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज आइसोबैरिक. अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 मानता हूँ एंड दिस इज ए पॉइंट नंबर 2, राइट. सो आपका यहाँ पे ये जो है आइसोबैरिक प्रोसेस है. दिस इज योर आइसोबैरिक. And point number 1, coordinate will be 100 kilopascal and 2 meter cube volume. And coordinate number 2 जो आपका हो जाएगा, that will be again the same pressure 100 kilopascal and 2.5 meter cube volume, right. तो इसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ से आइसोबैरिक के बाद है तो यहाँ पे आपका आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाएगा. एंड आफ्टर द आइसोकोरिक प्रोसेस दिस साइकिल विल गेट्स कंप्लीट फाइनली, राइट. सो दिस इज योर काइंड ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस. दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट. तो यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेट जो तीसरा पॉइंट अगर हम इसको 3 मानते हैं, सपोज वी आर एज्यूमिंग दिस एज ए थर्ड पॉइंट. दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, राइट. तो यहाँ पे हम थर्ड वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट कि द वॉल्यूम इज नाउ केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 100 से 200 हो गया. प्रेशर कितना हो गया आपका, प्रेशर हैज बीन इंक्रीज नाउ, दैट इज 200 kilopascal, right. And then you see the same line, that is 2.5 meter cube volume, right. तो अगर इसको हम यहाँ से the if we plot the same thing in the graphical equation like this, so we can plot it in graphical as well कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक कहीं 2 है, यहाँ कहीं आपका 2.5 है, right. So this is the pressure versus V graph, you can plot it, right. So this is like somehow your P100 and this is your somehow like P200, right. So P100 and P is 200. So with the help of that we can plot a graph like first point is the A point. यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक गया आपका, ठीक है, इधर गया ये, and this is a triangle basically. So we can set this that this is point 1, point 2, point 3, 1 से 2, 2 से 3 and वापस return 3, 1, right. So what will be basically work done? So work done यहाँ से निकाल लें. So work is basically your area under PV curve. Area under PV. So what is the area under PV? Like this is some kind of triangle. Like this is a half into 200 minus 100 into 10 to the power 3. That is Q into 2 point change in volume, 2.5 minus 2, that is the change in volume, right. So if we solve this one, so I think we are going to get it, the value 200 minus 100 is 100, 100 multiplied by 0.5, 100 multiplied by 0.5 is 1 divided by 2. So after dividing we are getting like minus 2500 joule, we are getting like minus 25,000 joule actually we are getting. तो आपका जो यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा
that will be same as a work done, same as a work done in heat, because यहाँ पे जो आपका internal energy है that is 0. आपके यहाँ पे डेल्यू क्या होगा, डेल्यू हो जाएगा आपका कांस्टेंट here, तो डेल्यू is 0, right? तो हम क्या कर सकते हैं, heat is basically extracted, यहाँ पे क्या आपका हुआ है, heat is basically extracted, so heat is basically extracted from the system in the complete cycle. So because heat minus है, heat is minus, so minus के कारण heat जो आपका है वो extracted हो गया है, and the amount of joule जो आपका है, heat कितना रिलीज हो गया है, that is equals to 2500 joule. I hope you have understood it well. All the best.